अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ hazekahali और आज आप लोग मिल रही हूँ बहुत ही लेटेस्ट वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। Okay guys, so video का title है What Makes Hanuman Chalisa So Powerful? Tantric explains TRS clip. If you enjoy the Ranveer Show, this is the channel for you. You don't have to consume every single podcast, but you have to binge watch all the clips on this channel. It's TRS Clips. You mentioned a very cool story about Tulsidas meeting Hanumanji. Do you think that that's where the Hanuman Chalisa was created? No, I think the Hanuman Chalisa came in later on, but definitely Tulsidas ji had full blessings of Lord Hanuman, or because of that blessings, he was able to produce such a superlative Ramcharitmanas. It's the amazing text. But it was definitely the blessings of Lord Hanuman was there. Okay. Why do you think the Hanuman Chalisa has this anti-ghost power? That's because of this answer will again deviate from the central theme of your our discussion. That's what it's about. Yeah. So certain deities are there in Dharma who have two specific propensities. They're excellent as protected deities. Hanuman, Lord Hanuman is one of them. Bhairava is another. Certain deities are there. Number one. Number two, they respond faster. Certain deities are closer to the earth plane than they respond faster. Hanumanji is one who is an immortal, who's never given up his body. So he's here in this plane. So he will respond to your pleas faster than others, specifically on certain areas. Now, if you ask Hanumanji, I want to become the richest man on earth, you may not get that because his domain is strength, power, protection, all these things. Instant, you will get that if your devotion is correct. Okay. Same for Lord Bhairava also. He also protects very fast. On the other hand, if you have to call Lord Shiva, the Shiva Swarupa, Mahadev, he is in his samadhi. It will take you 9, 10 lifetimes of calling before he responds. He will be aware that you are calling, but he may not be bothered to answer so easily. Wow. That is precisely the power of Hanuman Chalisa. It's a wonderful thing. There's so many sadhanas practices that can be done just with the Hanuman Chalisa. Really? Let's talk. Endless things. Let's talk about this because there is a lot of young Indians who are very into the Hanuman Chalisa, including myself, including Sanchit. Like superb thing. Superb means superb thing. In fact, in I'm talking from the tantric perspective also. So Hanumanji is considered Lord Hanuman is considered in the tantric perspective is also considered as one of the protectors. Okay, the Veeras. There are 52 Veeras. Okay, Veer means there are powerful entities who protect an area, any area it can be, and there are these Veeras are modeled around the primary devatas. So there is Hanuman Veer. In the Nathpanthi Sampradaya, their worship is very popular. There's Narsingh Veer, who is basically on Lord Narasimha, which is the Vishnu Avatara, etc. So you invoke their blessings, whether it's a disease related negative entity, whether there's a spirit related negative entity, whether something else. If you keep doing Hanuman Chalisa with faith properly, and there are sadhanas means suppose you want to just for 40 days somebody decides that I want to do Hanuman Chalisa Upasana. So you every day you sit and do at least 51, 54 times or 100 times Hanuman Chalisa. It will take you 1-2 hours, but if you're fluent, it will be very fast. You do this, you maintain certain basic rules. Celibacy is one of them required for getting a higher experience of Lord Hanuman because he was the Akhanda Brahmachari. Okay. And you offer some naivedyam, some bhog, some laddu, something to Hanumanji, put some diya, etc., etc. And after you finish your Hanuman Chalisa recital, say 54 times or 108 times, calmly sit down and meditate on the name of Lord Rama. Do this for 40 days, you will have a transforming experience. What do you mean calmly meditate on Lord Rama? Do you just say Rama, Rama? Just Rama? That name, power of the name is superlative. He is Hanumanji remains in this plane because he promised that as long as there is a name of Rama here, he will be here. Okay. And he is one of the best protected deities. The reason why he is so popular and he responds so fast, in my opinion, as I said, I have seen people who are more devotees of Lord Hanuman than even of Lord Rama. Okay, though Hanuman is considered as a bhakta of Rama, precisely because he remains in the physical plane. He has chosen not to leave this plane and go, and that is why he is very fast. If he is pleased with your devotion, if he is pleased with your call, and you are in trouble, some of the blessings and the beauty of it is that they are gods.
So they don't have to physically come to you. From wherever he may be, he can still get you protection. Just one blessing from you and you'll be protected. It's like an armor of Armor, sorts. absolutely. Okay. Protection from pretas and Anything. pishachas. So I had a very deep-seated fear of the dark when I was growing up. And that's a big reason I was drawn even more to the Hanuman Chalisa, especially Bhoot Pishach Nikat Nahi Aave Mahaveer Jab Naam Suna. When I would say that, I would, obviously I've learned the Hanuman Chalisa over the course of my life, but I began by reading it out of a book. And when it was that line, I would touch the book to my head saying, be with me. Probably because I was always drawn to these topics throughout my life. And they also say that when you speak about these topics, you're actually inviting those energies near you. So what we're doing here, and maybe even the listeners listening, they are kind of creating a sort of frequency that makes them one step closer to negative entities. My outlook on this is, one, go in with faith in God. And two, when you have knowledge about darkness, it brings you closer to the light. That's what I believe. So, Yes. And the other thing is that, in my opinion, generally, so it is one thing to be aware that there is a presence of, this hierarchy of negative entities there, because after, so as I was saying, Preta is one of the one of the more angry type of things. Beyond that, there are other pishachas and all that. Those are very dangerous, very, very dangerous. if you enjoyed this video, just know that this entire channel is full of playlists that'll take you down different pathways of learning. अच्छा, बेशक हनुमान चालीसा के हवाले से बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ मुझे नहीं लगता कि ये एक कंट्री तक महदूद। अच्छा, इसके अंदर जो एक शक्ति पाई जाती है, जो एक पावर पाई जाती है, उस पर लोगों का बहुत ज़्यादा बिलीफ भी है, और बेशक ऐसा है इन रियल। क्योंकि जैसे कि वीडियो में बताया कि जो हनुमान जी हैं वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, और उनका रिस्पॉन्स बहुत फास्टर है, और इसी वजह से शायद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का बिलीफ भी है। और कोई भी भूत प्रेत के हवाले से, घोस्ट है और कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपको फील होती है, क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मूवीज़ में मैंने देखा तो बाकायदा इसको पढ़ा जा रहा होता है, और उसके ऊपर आप ओवरकम करते हो, और उसको मतलब उससे आप पीछे छुड़ा पाते हो। और वो जो भी चीज़ हो, जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है, वो इस चीज़ से बहुत डरती है, और इसलिए ये पढ़ना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। और लोगों का इस पर ईमान इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब भी लोग इसको पढ़ते हैं, जैसे इन्होंने बताया कि आप दिन में 50 बार 60 बार अगर आप इसका हम व्रत कहते हैं, व्रत कर लो, तो मतलब बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज से बचाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा बहुत पावरफुल है। और वीडियो में ये भी देखा था मैंने, जिसमें बताया गया था कि अगर आप बुरे कामों की तरफ जा रहे हो, बुराई की तरफ अगर आप बहुत ज़्यादा माइल हो रहे हो, और अगर आप इसका व्रत करना शुरू कर देते हो, तो इसके एक दोहा में कहा भी गया है कि बुराइयों से रोककर भलाई की तरफ लेकर आता है आपको, यानी बुरे कामों से रोक कर भले कामों की तरफ आपको राग़िब करता है, ठीक है। तो अगर आपका माइंड डाइवर्ट भी हो गया, अगर आपका माइंड बुरे कामों की तरफ लग भी गया है, तो अगर आप इसका जाप करते हो, आप इसको पढ़ते हो, तो आप नेगेटिव एनर्जी से बचकर पॉजिटिविटी की तरफ आते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए कामों को बनाने में बहुत सफल है। और अगर आपके हर एक के बाद दूसरा काम ख़राब हो रहा है, और आप बहुत ज़्यादा निराश हो गए हो, अगर आप बहुत डिसअपॉइंट हो रहे हो, तो भी अगर आप इसको पढ़ते हो, तो ये आपके लिए बहुत कारआमद साबित होता है, आपके बिगड़े कामों को बनाता है। तो इसके अंदर एक अलग सी पावर है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके हवाले से बात करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा के हवाले से मैं समझे आप बहुत पहले से जानती हूँ, ठीक है। और जब भी वीडियोस मैंने पहले भी जिक्र किया आती थी, तो मेरे अंदर एक अजीब सा तजस्सुस होता था कि मैं जानूँ इसकी ट्रांसलेशन क्या है। एक वीडियो मैंने ट्रांसलेशन के हवाले से भी देखी, काफ़ी नॉलेज मिली उससे, और ये पता चला कि राम जी के बहुत बड़े भक्त थे, अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने राम जी की भक्ति करी। एक नई बात इसके अंदर पता चल रही है कि ये इमॉर्टल है, यानी कि अभी भी ये मौजूद है, और इसीलिए शायद इनका रिस्पॉन्स इतना फास्ट है क्योंकि ये गए नहीं हैं, ठीक है, इस जहाँ से, इस दुनिया से। तो ये अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अगर सही वे में, करेक्ट वे में, मतलब जो भी इनके मानने वाले हैं, अगर इनको करेक्ट वे में याद करें या सही चीज़ों के लिए याद करें, ठीक है, बहुत फ़र्क होता है। अब आप लालच के लिए, आप पैसा दौलत के लिए, आप फैम के लिए अगर आप कर रहे हो,
तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ें वैसे नहीं होती। लेकिन अगर आप सही वे में, मुश्किल में, परेशानी में, आप कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, और अगर आप पढ़ते हैं और वेट करते हैं इसका, याद करते हैं आप उन्हें, तो वो फ़ौरन आपकी मदद को पहुँचते हैं। तो ये बहुत ही मतलब एक मैं बोलूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। अच्छा, हमारा इन चीज़ों पे है बिलीव, तो हमें तो ये अनोखी नहीं लगती। हमें लगता है, हमें पता है कि ये चीज़ें हैं और बेशक इसके ऊपर ईमान है। लेकिन बहुत सारे जैसे फॉरेनर्स हो गए, या जो ऐसे लोग होते हैं जिनका मज़हब पर इतना यकीन नहीं होता, जो किसी मज़हब से मुंसलिक नहीं होते, और उनके सामने अगर ऐसी बातें रखी जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होते हैं और बहुत हैरान होते हैं, बहुत शॉक्ड होते हैं कि ऐसा है तो कैसे है। लेकिन क्योंकि जो भक्त होते हैं, जो भक्ति पर यकीन रखते हैं, जो इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं, जो ईमान रखते हैं, जिनके बिलीव्स होते हैं, तो यकीनन फिर उनके लिए मदद भी होती है, और वो इसमें कोई हैरानगी वाली बात नहीं होती उनके लिए। तो एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।